guys. So in the last lecture, we done all the important cities. Okay. Now we'll move to Indian sculpture in the pottery, the chapter 3 of this book. Okay. Now we'll just start the introduction first. The sculpture क्या था? Sculpture हमने starting में देखा था. Sculpture is a 3D type of imagination पे based एक चीज होती थी, जैसे कि छोटे से कोई मूर्ति बना दी, ठीक है. आर्किटेक्चर से बहुत स्मॉल था एंड नीड्स लेस मैथमेटिकल चीज़. मैथमेटिकल साइड बहुत कम लगती थी इसमें, but लगती थी मेजरमेंट और मैथमेटिक्स, बट नॉट एज दैट ऑफ आर्किटेक्चर. ओके. So now the sculpture of India depicts the vivid expressions of the people. देखो sculpture क्या दिखा रहे हैं हम दिखा रहे हैं कि उस expression of the people क्या क्या थे उस समय, ठीक है. द रिलीजन के बारे में बताते हैं हमें, उस टाइम की जो भी पॉट स्कल्पचर्स हैं, ठीक है. सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि हाउ दे थिंक, पॉलिटिक्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में. अगर आपने देखा हो अजंता एलोरा की केव्स में तो अगर कोई स्कल्पचर है, कार्विंग्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको दिखाती है वो कि उस टाइम की सोसाइटी कैसे थिंक करती थी, क्या था उस समय, ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इरोटिक पिक्चर्स ना स्पेसिफिकली. ओके. तो मतलब हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिस्ट भी दिखाता था कि कितने अच्छे आर्टिस्ट थे उस समय की, जो मतलब एक रॉक कार्विंग्स कर रहे थे, उनको एक टेक्निक से, प्रॉपर टेक्निक से एक रॉक पे कार्विंग्स बनाई जा रही थी उसको क्लियर करके ना. स्कल्पचर एग्जिबिट्स कल्चरल डाइवर्सिटी इन ऑफ इंडिया, ठीक है. सो एंशियंट इंडियन स्कल्पचर इज ओनली पैरेलल्ड बाय द ग्रीक ऑफ कोर्स. Sculpture heritage of India, ancient India specifically, and the priceless artistic masterpiece attracts connoisseurs from all over the world, of course. Use of stone, metal, terracotta, and widespread in the sculpture of Indian subcontinent because of climate condition of this region. देखो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से क्या हो रहा था, यूसेज ऑफ हमने बहुत सारे आर्किटेक्चर स्कल्पचर पढ़े, उसमें यूसेज ऑफ स्टोन भी हो रहा था, कि यूसेज ऑफ द टेराकोटा भी हो रहा था, यूसेज ऑफ द मेटल भी हो रहा था, है ना. तो मतलब क्यों हो रहा था वो, क्योंकि इंडिया में अवेलेबिलिटी थी वो, ठीक है, कार्विंग्स बनाने के लिए. क्लाइमेट कंडीशन ऐसी थी कि स्टोन्स थे, मतलब उस टाइम पे पेपर पेन तो था नहीं, ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज लाइक दैट. मेटल्स पे ऊपर कार्विंग्स या मेटल की मदद से पिलर्स बना देना, ठीक है, टेराकोटा की मदद से. Sculptural masterpieces have also been found in bronze medium, of course. The seer radio or lost wax technique for casting was known to the artist from the time of Indus Valley culture. So the technique is their stray video or the lost wax technique. ठीक है, for casting of course. Coming next, the tradition of producing sculpture masterpieces can be traced from across Indus Valley civilization by the small terracotta figurines and the bronze chariot of Dembad. ठीक है, Dembabad. The great stone pillars and carved lions, bull capital. देखो आप पिलर्स जो कार्व किए हुए, उनके ऊपर लाइन्स कार्विंग की हुई, पिलर्स के ऊपर बुल कैपिटल along with the widespread of Buddhist and Hindu themes in sculpture of the Mauryan period, ठीक है. Stipulate the beginning of Indian figurative sculpture. So of course ना पिलर्स के ऊपर पिलर्स, फिर carvings होगी lions की, bull carvings. A wide range of artistic excellence and tradition flourished in different parts of the subcontinent over the next centuries. So that's why a wide range of art and excellent जो फ्लरिश किया इंडिया और उसके बाहर भी. गुप्ता एम्पायर रिमेन द क्लासिकल एरा है. सो गुप्ता
classical era of Indian sculpture. तो अभी गुप्ता पीरियड में यह जनता एलोरा के डिस्कस कर रहा था मैं, तो वही रॉक कट केव्स थी, ठीक है। Okay. Now let us go with the sculpture of IVC in this valley civilization. Okay. Now the Harappa sculpture were extremely adept at handling three-dimensional volumes. The most commonly found were seal bronze figures and potteries. So हड़प्पा में बेसिकली अगर आप देखो तो वो थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम्स थे बनाया हुआ। Okay, now coming to the seals first. Archaeologists have found numerous seals of different shape and sizes. Although the excavation of the different site of हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो जो भी साइट्स हैं ठीक है उन पे seals मिली है different sizes different shape की। Now moving on next, while most of the seals are and most are square basically, so triangular भी मिली है, triangular rectangular है ना। Okay, now steatite, a soft stone found in the riverbeds, was most common material used. So material जो used हो रहा था steatite, most common material used. This is found in the river beds जो भी एरिया होता है रिवर का ना। और क्या यूज़ हो रहा था और एचेट हो रहा था चैरेट हो रहा था कॉपर फैंस एंड टेराकोटा सील्स आर आल्सो फाउंड सम इंस्टेंसेस ऑफ गोल्ड एंड आइवरी सील्स आर फाउंड मतलब अप्रोक्सीमेटली ऑल द मटेरियल्स जो बन सकती थी उससे मतलब बना ली थी उस समय के लोगों ने भी सील्स। तो मोस्ट कॉमन मटेरियल जो यूज़ किया गया था वो स्टेटाइट था ठीक है। गोल्ड एंड आइवरी यूज़ किया गया था। तो मोस्ट ऑफ द सील्स हैव इंस्क्रिप्शंस इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। Next move is which is yet to be deciphered. Give me a moment. पता लगाना पढ़ना रेडी स्टडी करना बाकी है उनको भी। ओके तो मतलब बेसिकली सब में पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट्स हैं जैसे कि अगर आप ये देखो यूनिकॉर्न सील है तो पिक्चरली रिप्रेजेंट किया गया है बट एक्चुअली में यूनिकॉर्न को ही रिप्रेजेंट किया गया है बट इट डिपेंड्स ना कि आप क्या बताना चाहते हो एक सील के द्वारा ठीक है। To be deciphered. The script was written mostly from right to left, but bidirectional writing style. It is right to left, one line and left to right another line is also been found. तो मतलब basically right to left लिखा जाता था but bidirectional writing style भी था। ओके bidirectional नथिंग आप एक लाइन राइट टू लेफ्ट लिखते हो फिर ऐसे लिखते हो फिर ऐसे जाते हो फिर ऐसे लाइक दैट। ओके and also has known. Animal impressions were also present, generally five, which were carved intaglio on the surface. The common animal motifs include a unicorn, humped bull, rhinoceros, tiger, elephant, buffalo, bison, goat, marker, ibex, and crocodile. Here, no evidence of cow. ठीक है cows on seal.
Generally, the seals had an animal or human figure on one side and an inscription on the opposite side or inscription on both the side. Some seals have inscription on a third side as well. Okay, मीन्स आप देखो तो एक साइड पे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक आप कॉइन भी लेते हो तो एक साइड हेड है एक साइड टेल है, ठीक है। अगर मैं बोलोगे उसमें जो अशोक स्तंभ बना हुआ है वो एक ही साइड बना हुआ है, ठीक है। तो सेम एज कि उसमें यही बोला जा रहा है कि एक साइड पे एनिमल बना होगा और दूसरी है या एनिमल होगा या ह्यूमन फिगर होगी और सेकंड साइड पे इंस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। और क्या हो सकता है दोनों साइड्स पे इंस्क्रिप्शन हो, कोई ह्यूमन और एनिमल का जिक्र ही ना हो या प्रिंट हो ही ना। Seals are primarily used for the commercial purposes. Okay, discovery of various seals in Mesopotamia and various sites such as Lothal indicate that seals were extensively used for trade. तो communication जो हमने ऐसे दी commercial purposes के लिए देख लिया, then it is used for trade. Uh, Amulets scanning on the person of their owners. Amulets. शब्द एक मिनट के ताबीज। ओके ओके, तो आप देखेंगे कि सम ऑफ द seal with hole, seal with hole on them found on the dead body, मतलब एज एन मतलब डेड बॉडी के पास होल करके आप अगर उसको रख दोगे, अगर आप कोई मटेरियल की फॉर एग्जांपल आप धागे से बना रहे हो, एक आप धागे से बना रहे हो कोई चीज़, अगर आप धागे को मिट्टी में दबा दोगे वो डिग्रेड हो जाएगा वहाँ पे दो एक साल में या फिर 6 महीने में जो भी टाइम होगा, ठीक है, इफ़ इट इज़ बायोडिग्रेडेबल। लेकिन अगर उन लोगों ने यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कुछ ऐसा मटेरियल हुक हुक की तरह फंसाने के लिए यूज़ किया हो जो डिग्रेड हो गया हो 50 साल में, तो सिर्फ आपके पास बचेगी वो सील जो कि आपके पास बनी है कॉपर ब्रॉन्ज जो भी मेटेरियल की होगी, ठीक है। तो वो उनको वहाँ वो सिर्फ एक छेद के साथ उनको एक सील मिली डेड बॉडी के पास, तो उनको इंडिकेट कर लिया कि भाई ये एम्यूलेट्स हो सकते हैं, हाथ में बांधने वाले ताबीज़ या फिर गले में जहाँ बांधे जा सकते हैं ताबीज़, ठीक है। ठीक है, probably seen in some of the different identification. Of course, mathematical images also been found. Which might have been used for education purposes, of course. Seals with symbols similar to swastik design. Swastik design भी मिला है। तो फेमस सील इसके आ जाएंगे आपके पशुपति सील एंड यूनिकॉर्न सील। नाउ पशुपति सील इट इज अ स्टेटाइट सील, बेसिकली जो हमने मटेरियल मोस्ट कॉमन यूज किया था, मतलब हमने नहीं है ना, स्टेटाइट मटेरियल से बनी है, मोहनजोदाड़ो में मिली थी, ह्यूमन फिगर है बेसिकली इस पे और डेटी सिटेड क्रॉस लेग्ड, ठीक है। द फिगर रेफर टू अ पशुपति वेयर्स अ थ्री हॉर्न्ड हेडगियर and is surrounded by animals. An elephant and a tiger are present in left side and the figure white while a rhinoceros or buffalo are seen on the right side. So four animals है इसपे, तो one is that elephant plus the tiger one side, rhinoceros, buffalo other side. Two antelopes are shown below the seat of the figure.
antelopes, drink, deer, could deers be? Okay, coming to the bronze figure. The Harappan civilization saw wide-scale practice of bronze casting. तो बेसिकली क्या था ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो हमने अभी पढ़ी थी ठीक है कि हम पूरा नहीं लिखेंगे सेरेपाड्यू प्रोसेस जो भी था इस टेक्निक वैक्स फिगर फर्स्ट कोटेड विद वेट क्ले एंड वैक्स फिगर जो भी थी उनको क्ले के साथ कोट कर दो वेट क्ले के साथ एंड सूखने छोड़ दो द क्ले कोटेड फिगर्स आर देन हीटेड उनको हीट कर दो और वैक्स मेल्ट हो जाएगी आपके अंदर की और जो आपके बाहर का फिगर था वो रह जाएगी ठीक है और उनमें एक छोटा सा होल कर दो टाइनी होल एंड लिक्विड मेटल इज पोर इनसाइड द होलो मोल्ड देखो होल करके लिक्विड मेटल डाल दो अंदर बाहर आपका वो व्हाट द मटेरियल हमने कोट किया था क्ले क्ले रह जाएगी अंदर आपका होलो था होलो जो रह गया आपका उसमें आप मेल्ट मेटल भर दो मोल्टन मेटल और कूल डाउन और सॉलिडिफाई होने दो और रिमूव कर दो क्ले को बाहर की देन यू गेट अ मेटल फिगर शेप ठीक है सो एग्जांपल इसकी आ जाएगी आपके ब्रॉन्ज गर्ल या फिर डांसिंग गर्ल तो this is a world oldest bronze sculpture found in Mohenjo-daro. This 4-inch figure depicts a naked girl wearing only ornaments. No, this is about her. Now coming to the terracotta. Okay, terracotta refer to use of fire-baked clay for making sculpture. It refers to use of fire-baked clay for sculpture making. Compared to the bronze figures, the terracotta sculptures found were less in number of course. The bronze से ये कम है. They were made using the pinching method. और गुजरात और कालीबंगन की जो साइट से वहाँ हमें मिला था मदर गॉडेसेस की एग्जांपल है. Okay, so mother goddess is nothing. It's a mask of horned deity. This is mother goddess. So bearded priest इसकी also एक एग्जांपल है. स्टेटाइट मटेरियल से बना हुआ था जो रिवर बेड्स में मिलता है. Now it is red sandstone figure, male torso. So it's basically made up of red sandstone. So these are some of the things in the Indus Valley sculptures. Now coming to the pottery. Okay, the potteries are found at the excavation sites are broadly classified into count plain and painted. So one is the plain and one is the painted one. Give a moment. Okay, so two types की plain or painted pottery. The painted pottery is also called as black and red ware. So painted को हमने black and red बोल दिया because it's maybe black and red painted. So okay, as it is used the red pigments and paint to paint the background and glossy black paint to draw design and figure on the red background. Okay,
Trees, birds, animal figures, and geometric patterns were the recurring themes of the paintings. Basically trees थे, फिगर ट्री फिगर थे, एनिमल या बर्ड फिगर थे, तो बेसिक वही रहे उनके थीम्स. ब्लैक रेड ब्लैक पॉटरी है ना, पेंटिंग पॉटरी की बात कर रहे हैं हम. Most of the potteries that have been found are very fine wheel made wares. So these are wheel made wares, okay, with very few being handmade. मतलब व्हील बेस्ड क्या समझता हूँ आपको, जैसे हमने फिल्मों में या फिर कहीं मूवीज में देखा हो, व्हील घूमता है एंड यू हैव अ मिट्टी, तो यू हैव मेक अ स्ट्रक्चर बाय रोटेटिंग दिस व्हील. आपको एक स्ट्रक्चर बनाते हो आप हाथों से, ठीक है, कोई भी शेप देते हो आप उसको. Some examples of polychrome pottery have been found, though rarely the potteries were used for three main purposes. तो देखो प्लेन पॉटरी, तो जैसे पॉटरीज का यूज़ क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है आपको फ्यूचर के लिए रखना, ठीक है, एज अ याद, ठीक है, एज अ रिमेम्बरेंस. कमिंग टू दिस, प्लेन पॉटरी वाज यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेज, मेनली फॉर स्टोरेज. अगर आपने बहुत बड़ी पॉटरी बना दी, इतनी बड़ी जिसमें आप हाउस होल्ड के आइटम्स रख लो, जैसे ग्रेन्स या वाटर रख लो, दैट इज गुड, ठीक है. सेकंड वन इज डेकोरेशन पर्पज के लिए भी होती है. आजकल तो सबसे ज़्यादा यही चल रही है, छोटी सी बना दो, ये 2 5 7 इंच की, देन यू विल गेट सम पॉट बना दिया उसको, या किसी वास बना दिया ना. Some of the potteries were perforated with a large hole at the bottom and smaller across the sides. स्टेनिंग, लिक्विड स्टेन करने के लिए भी यूज़ की जाती थी. ओके, ऑर्नामेंट्स. Coming to the ornaments, the Harappan used a large variety of material from precious metal to gemstone. So Harappans used precious metals to gemstones, ठीक है, to bones भी यूज करते थे वो, and black clay of course to make the ornament. Both men and women wore ornaments such as necklace हो सकते थे, fillets, armlets and finger rings. Girdles, earrings and anklets were worn only by women. ठीक है. Okay, now coming to this, beads are made of carnelian, amethyst, quartz, and steatite were quite popular. Beads made of carnelian, मतलब ये कालीन is a type of a material, and amethyst जैसे हमने steatite पढ़ा था अभी पीछे पीछे ही, जो जिससे वो स्कल्पचर्स बन रहे थे, मोस्ट कॉमन मटेरियल स्कल्पचर्स का था, ठीक है. ओके, as is evident from the factories discovered in Chanudaro and Lothal. तो बेसिकली जो फैक्ट्रीज चानुदारो और लोथल में थी, ठीक है, इस क्योंकि तो उस टाइम की जो इट इज़ प्रोवाइडेड एविडेंटली अच्छी मात्रा में था उनके पास ये सब कुछ, ठीक है, जो मटेरियल क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, ठीक है. Okay, for fabric the Harappan used cotton and wool, and which were spun by the rich and poor alike. The people of the time were conscious of fashion as well, as they can be inferred from the different style of hair and beard. Okay, मॉडर्न स्कल्पचर्स की तरफ चलेंगे. हमने इंडस वैली के स्कल्पचर्स देख लिए. नाउ कमिंग टू द मॉडर्न. Okay, sculpture was used primarily for the decoration of stupas. ठीक है, यक्षी स्तूपा एंड यक्षी स्कल्पचर. स्तूपास जो थे उनके जो डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज कर लिया इसको इन द तोरण एंड मेदी एज वेल एज अ फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन. ठीक है, टू ऑफ द फेमस स्कल्पचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड्स आर यक्ष एंड यक्षी. So famous was the Yaksh
and Yakshi. ओके, सो बेसिकली डेकोरेशन के लिए यूज हुए, ठीक है। नाउ फेमस हमने देख लिए, देवर ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप रिलेटेड टू ऑल द थ्री रिलीजन, जैनिज्म, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो दीज बेसिकली आर रिलीजियस, ठीक है। The earliest mention of Yakshi can be found in the with Silapadikaram, Tamil text. Similarly, all the Jain Tirthakars जो भी थे are associated with Yakshi. One magnificent example of modern sculpture is the Jetavana monastery at Saraswati with mango trees and banker Anath Pendik. ठीक है, so one of the best example is Jetavana monastery at Saraswati or Saraswati. Okay, Shalabhanjika. So this Shalabhanjika is a common decorative element and Indian sculpture found inside the outside religious, बुद्धिस्ट और हिंदू और जैनिज्म तीनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इन मैनी इंस्टेंसेस इट इज ऑल्सो रेफर टू एज द ट्री डेटी, ठीक। शाला भांजिका, सो बेसिकली अ ट्री डेटी। बुद्धिस्ट आर्ट में जो ये इमेज थी is an image of a yakshi holding a tree. So you can see this is yakshi and she is holding a tree. This is a tree. और रेफरेंस कोई भी रेफरेंस ट्री या रेफरेंस कुछ ही मान लो इसको, स्तूपा ऑफ सांची में भी है, ठीक है। स्तूपा ऑफ सांची, सांची स्तूप में भी है, भारहट एंड भारहट इन एमपी। तो in Buddhism, it is basically regarded as the auspicious symbol of incorporated into the decoration of stupas. So डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा auspicious symbol था ये। तो अगर आप ये शालाभांजी का धोई देखना चाहते हैं तो इट इज़ फाइंड इन सांची स्तूपा, भारहट और होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हलेबीडु एंड समनाथपुरा, कर्नाटक। Gajalakshmi, Elephant Lakshmi. So most significant Lakshmi aspect of Hindu goddess of prosperity Lakshmi. So Gajalakshmi is also very important. ठीक है। Now coming to the pottery, so pottery of the modern empire is generally referred to as a northern black polished ware. Pottery की बात करूँ तो is referred as northern black polished ware. Okay. They were characterized by the black paint and high lustrous finish, and were generally used as a luxurious items के लिए. So they have often been referred to as the highest level of pottery. This is a specific antique and northern black painted Shungas, and the question is okay. Shungas की बात करें सबसे पहले तो the Mauryan Empire was replaced by the Shunga dynasty. So Mauryans were replaced by the Shunga dynasty in 185 BCE. They were marked development in Indian sculpture and ornamentic उन्होंने ट्रू फॉर्म में डेवलपमेंट इन्हीं ने की है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ भारहट स्तूपा जो हमने देखा मध्य प्रदेश में इज मोस्ट नोटेड एक्सीलेंट ऑफ दिस पीरियड। भारहट इन
स्तूपा इन एमपी। ठीक है, यहाँ पे बना है द नॉर्दर्न गेटवे ऑफ भारत स्तूपा इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्क इन द भारत Yavana is a relief of a warrior which is dated this ना। Now आपके इसके बाद आपके पास आए कुशान्स। ठीक है, a new school of art evolved under the patronage of Kushan kings in the Gandhara school। तो गंधारा स्कूल हम देख चुके हैं एक बार। लेट अस जस्ट गो विद दिस। पैट्रोनेज किसकी थी यहाँ? पैट्रोनेज थी कुशन किंग्स। गांधारा स्कूल जो था which is evolved। ठीक है, the Greek custom of representing goods okay, the Greek custom of representing gods was adopted in this sculpture। The image of the Buddha physical details appeared in this sculpture। मतलब ग्रीक से लिया गया कैसे गॉड को रिप्रेजेंट करना है। In the first century AD, another indigenous school of art flourished at Mathura, which was characterized by the use of red sandstone। मतलब मथुरा वाले, तो मथुरा स्कूल uses red sandstone। Okay, noteworthy example of Mathura school of art was sculpture of Yaksha and Yakshi। ठीक है, मथुरा स्कूल एग्जाम्पल आ जाएंगे तो यक्ष एंड यक्षी। ठीक है, इसके स्कूल के एग्जाम्पल। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ स्कल्पचर के हम जाएंगे तो मॉडर्न स्कूल में आपके पास 3 स्कल्पचर्स थे, गांधारा स्कूल, मथुरा स्कूल एंड अमरावती। आई गेस यस अमरावती। So we'll just directly go difference दिया होना चाहिए। So now coming to the difference of these so एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखेंगे कहाँ से इन्फ्लुएंस आया था। गांधारा स्कूल में देखेंगे तो ग्रीक, हमने अभी देखा ग्रीक से आया था। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हेलेनिस्टिक स्कल्पचर। ठीक है, तो इंडो ग्रीक बोल देते हैं इसको। गांध मथुरा की बात करें तो इट इज़ डेवलप्ड इंडिविजुअली एंड एक्सटर्नल कल्चर से ये नहीं था इतना इन्फ्लुएंस्ड। अमरावती स्कूल इट इज़ ऑल्सो इंडिजिनस डेवलप। इंग्रेडिएंट देखें तो हमने अभी देखा कि ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, लेटर पीरियड में क्या यूज किया था, मड एंड स्टुको। नाउ दीज यूजेस द रेड सैंडस्टोन अभी देखा हमने, एंड अमरावती यूजेस द वाइट मार्बल ऑफ कोर्स द मोस्ट एडवांस। रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात देखें तो बुद्धिस्ट, ठीक है, एंड इमेजिनरी से रिलेटेड था, इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीको रोमन। ऑल थ्री रिलीजन से मथुरा वाला एग्जाम्पल था, इन्फ्लुएंस था हिंदू, जैन और बुद्धिज्म, एंड बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था अमरावती। पेट्रोनेज की बात करें कुशाना रूलर्स एंड सतवाहना रूलर्स। ठीक है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर डेवलप किया इन्होंने, जो कंधार है मॉडर्न डे, मथुरा, कंकाली, टी लैंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, द लोअर वैलीज ऑफ कृष्ण एंड गोदावरी। ठीक है, नागार्जुन कोंडा हमने अभी भी देखा थोड़े दिन पहले, जो मतलब पिछले लेक्चर लास्ट लेक्चर में, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल प्लेस है। फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर्स। So Buddha is shown in a spiritual state with a heavy hair. He wears fewer ornaments and seated as a yogi position में बैठे हैं। The eyes are half closed as in meditation। ठीक है, protuberance is shown in the head signifying the omniscience of Buddha। Coming next, so Buddha यहाँ पे delighted mood में है, smiling face, the body symbolizes the muscularity, wearing a light tight dress, the face and head are shaven। Okay, तो दिस इज बेसिकली नैरेटिव जनरेशन के पार्ट था। दिस इज लेस एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल फीचर ऑफ बुद्धा। स्कल्पचर वाज जनरली डिपिक्ट्स लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे लाइफ स्टोरी पे बेस है, यहाँ पे क्लीन शेप्ड है, यहाँ पे शेप है। ठीक है, तो यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में। यहाँ बेसिकली बुद्धा की लाइफ दिखाई गई है। सो दिस इज डन। सो आई गेस वी शुड मूव टुवर्ड द ग्रीक art and Roman arts. Greek and Roman style have some differences, and the Gandhara school integrates both of the styles. So Greek and Roman जो था Gandhara school ने basically इसको मतलब combine नहीं किया था। The idealistic style of Greeks is reflected in the muscular depictions of god and other men showing strength and beauty. A lot of Greek mythological figures from the Greek Parthenon has a sculpture using marble से made थे।
On the other hand, Romans use art for ornaments and decoration. रोमन्स क्या करते थे, तो यहाँ बेसिकली आपका फेशियल एक्सप्रेशन से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है, मास्कुलिनिटी दिखाना, स्ट्रेंथ दिखाना, ब्यूटी दिखाना। यहाँ क्या था, रोमन्स में ऑर्नामेंट्स और डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता, एंड इट इज़ रियलिस्टिक इन नेचर एज अपोज टू ग्रीक आइडलिज्म। तो ग्रीक का आइडलिज्म हमने देखा, ठीक है, बेसिकली ब्यूटी, मास्कुलिनिटी, स्ट्रेंथ पे, यहाँ पे बेसिकली इनको डेकोरेटिव दिखाना। Roman art projects realism and depicts real people and the major historical events. The Roman used concrete in their sculptures. They are also famous for their mural paintings. हम देख चुके हैं mural paintings पहले भी. Buddha in Greek Roman style and Roman portrait points out the similarities. ठीक है. So Greek Roman style, Greco-Roman basically. So various mudras of, let us see we have a time or not. Okay, we don't have. How much mudras these have? Okay, let us just go to the names of Bhumi Spardesh Mudra, Dhyana Mudra, again Vitarka Mudra, Abhyaya Mudra, Dharmachakra Mudra, Anjali Mudra, Uttarabodhi Mudra, Varda Mudra, Karana Mudra, Vajra Mudra. So these kind of mudras in the next lecture we are going to see some of them in detail, and then we'll move towards the Gupta period, which is a classical example. Huh? And then we have a Chola, and these are Indo-Bronze sculptures, and we go to the Mughal and then the post-independence and the further. Okay, thank you for now.